why company owned, company operated is better than franchisee owned, franchisee operated model? Right. So let me break it down into three, four parts, right? Let's break the industry into restaurant industry into three parts, right? Huh. One is your प्रीमियम लग्जरी डाइनिंग, बहुत एक्सट्रीमली लग्जरी फाइव स्टार होटल जैसे होते हैं, इसके अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, राइट? फिर आपका आ गया कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, जो कैफे हो गया, कैजुअल डाइनिंग हो गया, मतलब ऐसे थोड़े प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा ऑटोमेटेड होते हैं, राइट? फिर और फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी उसमें आ गया। फिर आपका आ गया लास्ट कैटेगरी हो गया क्यूएसआर, राइट? क्यूएसआर इज वेयर एक कोई बड़ा फैसिलिटी में सब खाना बनता है और बस छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स रहते हैं, वहां पे वहां का मेन यूनिट से खाना बन के जाता है और वहां पे खाली सेल होता है, राइट? हाँ. तो ये तीन मैं कैटेगरी करता हूँ, राइट? अभी आप देखोगे कंपनीज हु हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली franchise are not the first category premium restaurants, are Mm. not the second category also, right? Which is your casual dining restaurants, but are the QSR category. आप सबवे ले लो, right? दूसरे ले लो. Why? Because उनका जो मेन प्रोडक्ट है, right? वो पूरा एक सेंट्रल किचन में बनता है. तो क्वालिटी और प्रोसेसेस आर ऑलरेडी सेट बाय द पेरेंट कंपनी. देन दे स्टार्ट टू गिव आउट स्मॉल स्मॉल यूनिट्स वेयर उनको खाली बेचना है वो सामान. तो मेंटेन होता है और उनके ब्रांड गाइडलाइंस होते हैं. सो आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन, we in India, restaurants are in a very unorganized sector. In fact, we are not even given a industry status by the government, right? Mm. There is no Michelin star restaurant even which has come to India because the state of hygiene, licenses, and the category of restaurants, right? So franchise as a formula has not worked in premium restaurants and casual dining, right? Only in the QSR format, it has done very well, and people Mm. still do, Mm. right? Now I'll come to casual dining and premium dining. वहाँ पे क्या होता है So, और क्यों नहीं चला है? sorry Right. to cut you off, but just going back to your previous answer, you said कि restaurant industry is very unorganized. Right. Can you go more deeper on that? Why? Restaurant industry still accounts 80 to 85%, right? आप देखोगे स्ट्रीट साइड हॉकर्स हो गए, छोटी मोटी केटरिंग हो गई, इज नॉट अकाउंटेड फॉर, राइट? So it is comes in the unorganized. A lot of Right. people, not everyone, but earlier a lot of them never used to pay taxes also, right? So it was a service which was given, which was not accounted. So that is the reason it came in the unorganized sector, right? Mm. Very few people, it started from five stars, where they started to organize the restaurants, right? Because they needed restaurants in their premises for them to get the five-star tag, right? Huh. One needed a coffee shop, one needed two specialty restaurants. That's how they started. उसके बाद in the last 8-10 years, the five-star से restaurant बाहर आने लगे in the high Huh. street, Huh. and big chains started to open those, right? MNCs came into India. You have the McDonald's, you have the Burger King, right? You have the Domino's, Jubilant Food. They started to come to India, and they come from an organized place where already उनके SOPs बने हुए हैं, हर processes के हर एक चीज के वो है. So when they set up their offices, sent team members from UK and US, so that's how it became easy for them to replicate that, right? Hmm. So this is how the ecosystem of restaurants work there. In fine dining and casual dining, franchise, answering your question, has not been a success is because it is very difficult for others to have the same passion what you have. If I franchise Burma Burma, I have a passion, I have a story, I'll run it in some way. If I give it to someone else to run it, ही में से नहीं यार, ये तो शायद से चल नहीं रहा है, नॉन वेज नहीं है, अल्कोहल नहीं है, अरे मैंने इतना पैसा डाल दिया है इधर, 2-3 करोड़ डाल दिया है. तो दे स्टार्ट टू पैनिक एंड दे सेड कि यार चलो इसको थोड़ा मल्टी क्विजीन डाल देते हैं, सुशी भी डाल देते हैं, डिमसम भी डाल देते हैं. तो व्हाट हैपेंस, योर ब्रांड वैल्यू ऑन व्हिच यू आर बिल्ड स्टार्ट्स टू गेट diminished, Diminished, right.
राइट? तो वो फिर कस्टमर सोचेंगे, गेस्ट सोचेंगे यार आपके इधर अलग मिल रहा है, वहां पे कोई अलग दे रहा है, तो देन आई विल से नहीं वो फ्रेंचाइज का है, ये ओनर ड्रिवन है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने लगी लास्ट 8-10 years में, राइट? पीपल नेवर यूज टू मेंटेन दैट फिलोसफी, राइट? एंड ऑल्सो franchise is something you need to be franchise ready. Just having a good product does not mean that someone else could run it the same way. You need to support. You keep charging a fee, हाँ right? You need to हाँ have a proper Bible of SOPs, processes, videos, what to do, what to not to do, company policy, training your team members. Matlab, and then only it's a proper like McDonald's when they came to India. So they also franchise, but they choose one partner to open outlets, not individual outlets. हाँ Westlife, oh yeah, that's why they've been successful, right? So they had like a good 5,000 page ka booklet, and you have to follow that Bible to the T. Then only you can open franchise of take a franchise of McDonald's. Same thing with Tata, which they did with Starbucks. हम्म So as you said, franchise owned company operated model is also which is doing well, wherein the franchise has put in the money, but the management is done by the company, parent company. हम्म हम्म So that model has started to take place in the premium and casual dining restaurant because you're assured of the quality of service that will be given. Yeah. And in the lower QSR segment, you do have restaurants franchising only if they have a good SOP manual. right. And I was just going through franchise India और वो सब में, so there were names that I haven't even heard of. Right. और वैसे brands they are franchising just for increasing their revenue, और वो आपको एक आपकी franchisee fee मिल जाती है, and there are some of the brands was just they just want to put more and more outlet, they don't care about the brand, बस मेरा ब्रांड दिखना चाहिए, तुम एक एक ही किलोमीटर के अंदर 5 कर दो, वो चलेगा मुझे। क्योंकि इन बड़ौदा ऑल्सो देयर इज वन ब्रांड इन द बेवरेज इंडस्ट्री, they have like their franchisee in every kilometer they have 1 or 2 stores, I'm like, तो मतलब ही क्या रहा, तो फिर ये तो फिर आप फिर ये पैसा छापने के लिए ही आप ये कर रहे हो। 100%. You get so excited by getting that franchise fee. हाँ मतलब यार हाँ ये तो खाली नाम देने का यार, लोग 20 लाख 25 लाख दे रहे हैं और हर महीने का आपको मैनेजमेंट फी मिल रहा है, इससे अच्छी चीज क्या है? तो दो जो जो आ रहा है, तो एवरी थर्ड डे यू आर गेटिंग 25 लाख 25 लाख, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग एज यू राइटली सेड उत्सव इज हाँ दैट दे आर कैनिबलाइजिंग देयर ओन बिजनेस। आप हम्म एक जन को फ्रेंचाइज दे दिए, वो कर रहा है समझो ₹1,00,000 का सेल। अब वही एरिया में 5 जन का दे दिया, वो ₹1,00,000 वाला सीधा 20,000 पे आ गया और लॉस करने लग गया, राइट? हम्म और फिर बोलता है सर मेरा चल नहीं रहा है, वो बाकी 4 भी नहीं चल रहे हैं और फिर वो कंपनी उसकी बंदी हो जाती है।